A very good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning to everyone. You can Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. good morning to Good everyone. morning, ma'am. Very good morning. So you can write in the chat box whether you are unmuting because that will create noise. Fine enough. So first of all, I would like to say we are here more than 50 now. So I would like to tell you one thing that though it was the assignment without any marks, right? Okay, but only 13 students they shared those things, right? Though some of them would not, did not share that, the written document, but it's okay. At least they shared the audio and they shared the timing details and all. So I have a one question first of all to them. I am taking the names. Please, at that moment when I would say you have to unmute everyone. Just listen carefully. The names are listen carefully. Okay, I am repeating it. Listen carefully again. I am saying Srishti Negi, Venu Kapoor, Ankita, Anagha, Rishita, Aditi, Deep, Yashpal, Kartikeya Solanki, Abhin Josh, Shivani Srivastav, Mukul Gupta, and Priyanka Jain. Any one of you, if your name is not there and you have sent, maybe possible that I could not check. So you can tell me, you can write me, you can write your name here. Anyone, if you feel like that you have sent and I could not check, so you just have to reply back uh, on that WhatsApp only that you have sent, right? You just reply back to that WhatsApp what you have already sent. Might be possible because sometimes it happens that I just unread the messages. I select and unread. So might be possible that your message was also selected and I just unread that. So you can just drop a message that you have sent, reply to that message yours only, right? Abhishek Singh. So Abhishek Singh, you can Lakshmi Priya. You don't have to write your name here. You write, in WhatsApp where you have sent. You just have to write your name there, so that your message will reflect me here, right? You don't have to send message again. You just have to write your name there, so that I can check the old message. I don't delete, so that is there. Fine. You please check it. Do that. Lakshmi Priya and Tushar, you are saying that you have sent. So just message me there. Yes. So Shivani has written. Shivani, okay. Yes. So I just forgot to mention your name. I just am going to write it down. Yes. Yes. Shivani, your video is there rather. Yes, ma'am. Yeah, yeah, it's fine, no issues. So others, similarly, you have to do, you have to write your name in your message WhatsApp where you have sent, so that I will get your message again. Yes, even I have replied to some people, but your name was not there at time, and that's why I could not write. Mag Jindal has also sent. So let me correct myself. Actually, I was extremely busy. I could not went through entire message, once again. So then Abhishek Singh. Abhishek, you are just sending me your name here, but there was no message at all that you have sent any, what is called your audio or written or anything, video, nothing is there. Fine, Abhishek Singh. And somebody has written, there is no name, but it is written, I'm sorry, I sent you a mail. Mail I did not say. Okay. Because I was just whenever I get free, I just checked on my send. Okay, you are saying only that it is on mail. Fine enough, Lakshmi. So I will check it out on mail. I could not check yesterday. Yesterday I could not check. I am sure you were not sending on time because it was for the yesterday's class.
which I did not take, right? Okay, fine, let it be. So if I would include each one of you, still there are only 15, 16 students now, those who have shared the task. Now the point is, if we are attending the class, why we are attending this business communication class? To improve our three things only, right? Communication skill, that is written, spoken, listening. So listening, what I could say that those who did not share the assignment, they did not listen. Yes or no? They did not listen my voice. That means hearing was not, listening was not there. We are going to have this topic now. So I am giving you example from your own class that those who did not perform that task, I don't know why. So why they did not share? What is the reason behind? May I know? I did not ask that you have to speak for half an hour. I did not say that. I just asked you to perform that task only. So I am asking some people, those who have not shared, uh, you please unmute yourself and let me know what was the reason behind it. Uh, Ria Jan, Ria Jan, Yes, ma'am. what is Good the morning, reason behind? ma'am. Yeah, good morning. What is the reason behind? Why did you did not share your task assignment? मैम मैंने लिखा हुआ है और टाइम भी रिकॉर्ड किया हुआ है बट मैंने शेयर नहीं किया। मैं अभी कर देती हूँ। नहीं अभी करने का तो देखो बहुत अच्छी बात है कि आप आज कर दोगे बट माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू डिड नॉट डू दैट बिफोर हम्म, रीजन क्या मैम था? तो रीजन पूछ मुझे लगा क्लास में ही होगा इसलिए। में ही होगा तो दैट मीन्स लिसनिंग वाज नॉट देयर यस और नो अगर हाँ आपने अगर आपने ये सुना कि क्लास में होगा तो दैट मीन्स आपने ये नहीं सुना ना कि व्हाट्सएप पे भेजना है जैसे लक्ष्मी प्रिया ने मेल पे भेजा दैट मीन्स शी डिड नॉट हर्ड एट दैट टाइम दैट शी हैज टू सेंड ऑन व्हाट्सएप देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आप लोगों को कमी नहीं मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए बात कर रही हूँ मुझे आपको डाउनग्रेड नहीं करना मुझे कुछ नहीं करना मेरे को बस आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए माइंड इट मुझे सिर्फ आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए ये सेमेस्टर ओवर होने से पहले आई कैन से और यू कैन से दैट यस नाउ आई एम द मास्टर ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड लिसनिंग सो दैट आई ओनली आई वांट फ्रॉम यू पीपल ठीक है मुझे हम्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बाकी मुझे पता है जब ये तीन आ जाएगा आप सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा कर लोगे देखो सब्जेक्ट में आप चाहे 100 में से 100 लेके मार्क्स आओ लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते आप लिख नहीं सकते आप सुन नहीं सकते दैट मीन्स किसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ समझ आ रहा है मेरी बात आई होप सब यस लोग मैम। समझ आ रही है अनगा आर यू क्लियर विद द हिंदी पार्ट यस मैम। यस मैम। है ना तो किसी को हिंदी ना समझ आ रही हो तो मैं दोबारा से बोल दूं दैट पर्पज ऑफ टीचिंग बिजनेस कम्युनिकेशन इज नॉट टू स्कोर 100 out of 100 the purpose of teaching this subject is that you must be acquired the written skill the spoken skill the listening skill and the understanding and everything right so that you can say that yes, I know everything now onwards, and I'm the master of all, right? All these skills. So that was the motto of teaching business communication at this particular level in BBA and BCom honors. Otherwise, you know everything, na? You know English, you know writing, you have passed 10 plus 2 and all. So what is the need of teaching business communication? The need is that you are acquainted with this kind of skills. And if you don't know, see nowadays UGC new education policy, you must have heard that name during this conference also. Some of you, if you have attended that program, so you must be knowing that there is one a new education policy, and it talks about the skills. So if you don't learn the skill, then education is not solving the purpose. I hope I am clear with the facts, right? Just gaining the degree, obtaining the degree, it is not going to help you out. And I am telling you, there is no need to go for higher studies. If you higher studies means after BBA, BCom honors, you don't require to do MBA. If you have something, anything which is going to give you a job, and I am telling you, being in the placement cell for last 20 years almost, I am telling you that if you know
you don't know anything. You just know English skill. You know English language. You all know that. I understand it. But the matter what I mean to say that if you know English in terms of writing and speaking and presentation and all, then you are going to have a job. Frankly speaking, and a good pay job. So trust me and do it. Fine enough. So now I am taking the next name of Chitij. Chitij, why you did not share? And one thing more here, Vikram Yadav, you have again joined from the personal ID. Please log off and join with your official ID. Yes, Chitij is there. I hope I have seen his name here. Chitij, are you there? Yes. Chitij, I hope you are listening me. See, there is no response. If you are unable to unmute or something, you have to log out and again log in. If you are trying to speak, please. Sometimes it happens in online platform that you have to log off, then again log in, so that you can speak. Thank Vikram, please manage it. Log in with your official ID. And Monday onwards, I am not going to allow those enter with personal ID. I hope it is clear to everyone. So now the question is, let us start from the question itself. I took few names and you all have heard it. So now I need 4 to 5 names from you, and I am going to take the name and that person will speak. I'm just going to check listening skill right now. So Anurag Gupta, unmute yourself and let me know. Yes, ma'am. Tell me the 5 names which I took for that they have submitted the assignment. एक खुशी चौहान. No. मैम यस, आपने पता है कि उसने दे रखा, खुशी चौहान ने दिया है. आपने अभी जस्ट बोला था जब हमने शुरू में 10-13 नेम लिए कि उसमें खुशी चौहान का नाम था कि उसने दिया है. एक दीप गुप्ता ने दिया है दीप, और मैम वेणु कपूर एक उसने दिया है. एंड मैम दो, चलो 3 मान लेती हूँ, पर खुशी चौहान मैंने नहीं बोला है, 2 ही है. एक गलत आंसर है, 2 और बोलो. देखो इतना लगना चाहिए. स्टॉप नाउ. ऋतिक कुमार सिंह, you don't have to repeat these 2 names. Any 5 names you can speak. Hrithik, be ready everyone. Have a small game here. Good morning, ma'am. Good morning. Tell me the 5 names. फटाफट बोलना है, ये नहीं कि पॉज ले लेके बोलना है. Your time is up. Ananya Sani. Ananya Sani, just unmute yourself and speak. Yes, ma'am. Yes. Tell me immediately 5 names. Ma'am, Anugri Pratap, Priyanka Jain, Aditi Tiwari. Ma'am, these were 3 names only. I said 5. Ma'am, Okay, fine. Let it be. Kabir Arora. Kabir, unmute yourself and let me know the names. Yes, ma'am. You don't have to repeat the names, which have already been said. Ma'am, Abin Josh. एक ही पे टके गाड़ी. Meenal Maheshwari, unmute yourself. And this is the last one, Meenal. Yes, ma'am. Ma'am, Rishita, Kartikeya, Mukul, Anaga. एक अनगा मत रिपीट करो. हाँ, बोलो, आगे बोलो. कोई एक फटाफट और. चलो, टाइम अप. So now just see. The problem is that we are not the hearing. We are not listening. No? अभी नाम बताया, छोटे छोटे से names हैं, and people are not telling the names. Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. That's great.
So, are you understanding it? Why I asked you people to repeat the names? Just to ensure that how much you could listen. And the answer now you are seeing the answer. You are experiencing the answer, है ना? कितना सुनते हो ये अभी के अभी समझ आ गया. Just imagine if you don't remember the names, small names, then how it is possible that you are going to remember entire subject matter and everything. And if some program is there where notes and contents are not being provided, at that moment how we are going to get the success out of that program? Like if I would say that you people attended the international conference and there were no content for any session was distributed after the conference, then how you will recall the things? अभी के अभी नाम भूल गए तो बाद में क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम ओनली. If I am telling you, if I am listening, then I am 100% there. If I am not listening, frankly speaking, I don't know anything. Sometimes it happens that I am just physically present there, but I am not listening anything. It's not with you only, it is with me also. For that matter, we have to focus on that, yes, I have to listen. Are you clear with this term? We have to listen it. Then only we can listen. There is a difference between hearing and listening. We say generally that I am hearing your voice. Yes, hearing means what? Some noise, some voice is coming to your eardrum and you are, that is creating some vibrations and you are listening and you are understanding, and that is fine. Understanding तो जाता ही नहीं है. Hearing doesn't go up to the point understanding. Once you understand, you will memorize it. Fine. So what is happening? It is just a noise which is coming to your eardrum. That's it. Nothing else. That is the hearing. But the listening, it goes inside. You understand something. You take out meaning something from there, and then you also can speak up that yes, this was the topic. This was the thing. I can tell you many stories, that once the person is, even it has happened with me also many times till 10+2, that, in the morning, I used to wake up at that time somewhere 4 o'clock in the morning, and I was studying for 2 to 3 hours in the morning, 4 to 7 like that. My elder brother, he was elder to me for 12 years. He was not, trying to wake me up that yes, Sima, just उठ जाओ पढ़ लो, ऐसा नहीं. वो क्या करते थे, टेप रिकॉर्डर उस टाइम पे 94 की बात बता रही हूँ, 93 94 की, उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर फुल साउंड में, फुल वॉल्यूम में बजाते थे. और पहले तो भगवान का भजन चलता था, कुछ कुछ चलता था, उसके बाद गाने शुरू हो जाते थे. 6 बजते बजते गाने वगैरह शुरू हो जाते थे, ठीक है, मूवी के गाने और ये वो, और 2-3 घंटा बजता रहता था. मुझे कभी उठाने नहीं आते थे कि तुम उठो. हम लोग का दोनों का बेडरूम अगल बगल में था, वो बजता था तो मुझे भी मतलब आवाज पूरी तरह से आती थी, मैं जग जाती थी और जग के उठ के मैं पढ़ने बैठ जाती थी. मुझे समझ में आ जाता था ये जगने के लिए मतलब बजाया जा रहा है. अच्छा, आई एम टेलिंग यू, मैं उस समय तक 94 तक, अभी नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं है, मुझे गाना जो है ना सुनने का बड़ा शौक था, बहुत ही ज्यादा. और कुछ कुछ गाने तो मैं वेट करती थी कि ये वाला गाना बजेगा ना तो मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेके मैं इस गाना को सुनूंगी, ठीक है. जब फिर से कोई कैसेट लगा, मान लो उस टाइम का मैं क्या बताऊं, उस समय क्या था, जैसे मान लो एक एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मिस्टर इंडिया मूवी. हालांकि उस टाइम पे मैं बहुत ही और भी छोटी थी, मैं 12th में नहीं थी तब, पर एक आध गाने अच्छे लगते थे. चलो ठीक है, बजेगा तो ये वाला गाना बजेगा ना, कैसेट होता था उस टाइम पे, तो कैसेट में आएगा ये गाने के बाद ये गाना आएगा और मैं इसको सुनूंगी. And I am telling you, at the same volume, when I was, studying at that moment, I was not listening anything. My entire focus was in study. उठती थी, सोचो जिस आवाज से, वो आवाज में सुनती नहीं थी. क्यों? क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस कहाँ होता था, अपनी स्टडी पे. और कब वो कैसेट चेंज भी हो जाता था मुझे पता नहीं चलता था. जब वो गाने खत्म हो जाते थे तो यू हैव टू, once it was stopped, you have to again take out and then you have to play. So you can understand, just I'm trying to tell you that if you are not focusing upon something, you are not going to listen. Sorry, give me a minute.
So I'm sure this type of things have already happened with you people. And it is not only your case. So nothing to worry about it that I did not remember, like, Shubham is saying. But the matter is, am I clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Anand, Yes, ma'am, clear. please check now your network. So what I am trying to say here, now coming to the point, that if you are not remembering, that means you were not listening at that moment. Fine. So, Ma'am, effectiveness is important in everything. yes, but everything, yes, effectiveness is important, but there is one, way to learn something, that is listening. Fine. So, and here we are talking about communication. So, definitely we will talk about three things only. Yes, effectiveness is required everywhere. There is no doubt in it. So now just somebody from you, Kshitij. Kshitij, are you there? Kshitij, are you there? Okay. Ritik Kumar Singh, please read this slide. Each word is very much clear. If anything is not clear, I am going to describe it. So before that, Ritik Kumar Singh, are you there? You please read the slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Significance of good listening. पूरी slide An पढ़नी है ना? attentive, an attentive listener understands between speaking by the speaker. A good listener learns more than the indifferent listener. A good listener learns to distinguish fact from the opinion, understand and evaluate influences and reasoning. Detect prejudice, assumptions, attitudes. A good listener can often restructure and argue speaking into clear meaning. Yes. Thank you so much, Ritik, for Okay, ma'am. reading this slide. Thank you so much. So you must have understood, Ritik, that where you have made mistakes, right? So what I would say that you need to read, daily at least 20 minutes, right? Yeah, सुन ma'am. रहे हो ना बेटे? इट इज फॉर योर बेटरमेंट. ठीक है, आप जो भी करोगे वो आपके बेटरमेंट के लिए है और मुझे खुशी होगी कि मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन था. ठीक है ना? तो प्लीज आप Okay, ma'am. डेली कम से कम 20 मिनट आप कोई भी चीज इसी तरह से जैसे मैंने बोला है पढ़ने के लिए इंग्लिश में उठा के पढ़ना. ठीक है, आपने बहुत Okay. जगह पे एरर्स किए हैं. मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनीथिंग. आपको खुद समझ आएगा. मैंने पीपीटी ऑलरेडी भेजा हुआ है, आप इसको ही पढ़ लो. चाहे इसके दो फायदे होंगे, आपको कंटेंट भी याद हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी. ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज I am talking to other people, those who are listening. Can you tell me where he made the mistakes? Anyone? Yes, Anyone ma'am. who is there? Yes. Tell me your name. Yes, ma'am. Shivani Please, Srivastava. Shivani, you first Yes, tell me up to 2 points. First line and second line. Where he made the mistakes? ma'am, it's evaluate, and I think he said something else, and inferences and reasoning. Okay. Math Uh, was, Ma'am, in just, first line just there a is second. better, not difference. Ma'am, between me and ma'am better. Yes. What? I'm very happy. Who was this? Who said that better? He said between, not better. Priyanshu Chaudhary. Priyanshu, that's great, Priyanshu. So the matter is, see, what has happened here, that he could say, Ritik, please don't take it otherwise. Again, I am telling you, आप लोग में जो मेरे क्लास में क्लास अटेंड करते हो ना, आप लोग कोई भी ये मत सोचना कि मेरा नाम आ रहा है तो मैम मुझे मतलब डाउनग्रेड करने के लिए बोल रही है. नहीं, प्लीज बेटे इसको अदरवाइज मत लेना. हम लोग यहाँ पे ये अभी मैं किसी को मैं नहीं बोलूंगी ना, आजकल मुझे ठंड बहुत लगती है तो मैं बोलती हूँ तो मेरे वर्ड से क्लियर नहीं आते हैं. तो मेरे को मेरी प्रॉब्लम पता है.
मैं गर्म पानी पीऊं फिर भी अभी भी स्टैम्बिंग टाइप मेरे को हो रहा था, बट इट्स ओके, व्हाट आई कैन डू। तो मैं अब अगर ये सोचूं कि अरे बच्चे मेरे क्या सोच रहे होंगे, तो मैं क्या करूंगी ना, या तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सर्कल को देखेंगे तो क्या, अब मैं ये सोचूं कि वो क्या सोचेंगे या मैं अपने अपने को ठीक करने की कोशिश करूं। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन माय मिस्टेक्स रेदर देन फोकसिंग ऑन व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। तो कोई भी जितने भी 70 बच्चे अभी हैं क्लास में, कोई भी ये मत सोचना कि मैम मेरे को कुछ, आप सबके बेटरमेंट के लिए मैं ये कर रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी Priyanshu that you could check that he said between, not the better. What is there? The better is that what we are, familiar with, that only we speak. So that is not his problem. That is the problem of our mind. कि वो जो दिखता है ना, अनगा कहीं पे दिक्कत होगी प्लीज बता देना बेटे, क्योंकि कुछ चीजें ना जब हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। हमारी लैंग्वेज तो चूंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी ही है, तो थोड़ा सा अगर आपको कहीं डाउट हो ना, कहीं प्रॉब्लम हो, तो मुझे क्लियर करना कि मैम ये समझ नहीं आया, आई विल रिपीट इन इंग्लिश फॉर यू एंटायरली, बट just to for everyone, and just to say my words in my, with along with my feeling, I am telling in Hindi, right? So the matter is what I would like to highlight, that why he said between, because between he could just manage that, it is not that he read wrongly, mistakenly, no, he said between just because it came from his mind, fine। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हम कभी भी कुछ करते हैं ना, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ग्रूमिंग हुई है, जो हमारी मेंटल थॉट्स जो आते हैं उसके हिसाब से भी हम कई बार बोल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। वी हैव टू फोकस अपॉन ऑल दिस थिंग्स, दैट व्हेन आई एम रीडिंग आई हैव टू रीड द exact content. We don't have to add. Somewhere he added, like the also. Somewhere something is few words he added, and few he pronunciated wrongly. So that we have to understand. So good enough. So you people have. So are you clear with this slide, everyone? What we have to understand, that attentive listener understand better. Why you people could say that this was the issue, because you listen to that what he said in a well manner, and you understood it, that this is the thing, right? Now a good listener learns more than the indifferent listener. Good listener means the person who is listening, not hearing, and indifferent means the person who is just hearing the things. So what you will learn, your learning will be different from that person who is just hearing, right? Third point is saying a good listener learns to distinguish fact from, yes, this word he also is spoken wrong. He said the wrong pronunciation. Fact from opinion means you can differentiate. Distinguish means you can differentiate fact from opinion. Means if I am saying, sometimes it happens when the speakers are speaking, not the teachers. Teachers are having the content, so they will speak the things which is relevant to that subject. But when somebody is speaking, they are like, जो हमारे जैसे सेमिनार सेशन में हुआ था, हमारा इंडस्ट्री सेशन हुआ था, तो जो इंडस्ट्री के लोग आए तो कोई तैयारी करके थोड़ी ना वो अपने ओपिनियन को बता रहे थे, है ना। तो वो हो सकता था कि फैक्ट नहीं बोल रहे, बट जो सुन रहा है ना उसको पता है कि यहाँ पे इन्होंने गलत बोला, ये इनका अपना ओपिनियन है, फैक्ट तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी पूछ दूं कि जो फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो क्या है, तो हो सकता है कि कुछ लोग आप में से न्यूज देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उनको सब कुछ पता होगा कि गवर्नमेंट ये 3 बिल्स लेके आ रही थी, उस 3 को वो नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी है, तो उसकी वजह से वो स्ट्राइक वहां पे धरना दे के बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पे। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो फैक्ट्स पता है, और उससे मैं कहूंगी कुछ बोलो क्या है, तो वो आप नॉर्मल अपना ओपिनियन बता दोगे कि ये रीजन है, फार्मर को लॉस हो रहा है इसलिए वो बैठे हुए हैं, है ना। तो दैट इज दी ओपिनियन, आप फैक्ट्स की बात ही नहीं करोगे। जो जिसने न्यूज सुना है, जिसने न्यूज पढ़ा है, वो किसकी बात करेगा, फैक्ट की बात करेगा। फैक्ट क्या है, 3 bills related to the farmers, about their income, about the minimum selling price, and these are the things there. So that person who has gone through with the news, that person will speak in that manner. Minimum selling price, now government is saying to remove that. So that is why they are saying, no, we don't want to accept this bill. Then government is saying that culture and all, agent culture. So there will not be bichwalia kind of thing, agent kind of thing. So entire money will come directly to the farmers.
So the point is, the person who is aware, they will speak the fact. Those who are not aware, they will speak the opinion. तो जो सुन रहा होता है ना, ध्यान से सुन रहा होता है, उसको पता चल जाता है कि कौन बातें कर रहा है, बातें बना रहा है और कौन फैक्ट बता रहा है. समझ आ गया? Understand and evaluate inferences and reasoning. Inferences means meaning, some meaning, whatever it is saying, some person is saying, the person who is a good listener can make out the meaning. He can evaluate. Evaluate means वो उसकी evaluation कर सकता है कि ये अपने दिमाग से अपनी evaluation कर सकता है कि इसने जो बातें बता रहा है उसका meaning क्या निकल के आ रहा है, logic क्या निकल के आ रहा है. Reasoning means what? Logic. कि logic क्या निकल के आ रहा है. ठीक है? A good listener learns to detect prejudices, assumptions and attitudes. उसे पता होता है कि कौन सा, डिटेक्ट मीन्स वो मालूम कर लेता है कि whether that person speaker is speaking with prejudice mind. Prejudice का मतलब क्या होता है कि पहले से ही कुछ दिमाग में है, उसको हम बोल रहे हैं. जैसे कि होता है ना, जो प्रो बीजेपी है, तो कुछ भी होगा तो प्रो बीजेपी ही वो बोलेगा, है ना. और अगर निगेटिव में हम जाएंगे तो वो अगेंस्ट कांग्रेस बोलेगा या कोई और आप पार्टी बोलेगा, राइट. तो पहले से वो प्रेजुडिस माइंड का पर्सन बोल रहा है या वो क्या है, वो समझ आ जाता है जब आप ध्यान से सुन रहे होते हो. या वो अपनी एजम्पशंस बोल रहा है. जैसे कि मैं कहूँ कि हाँ भाई किसी भी हालत में लेट तो होना ही नहीं चाहिए, यू नो, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए. तो दैट इज व्हाट, दैट इज माय एजम्पशन. तो वेदर आई एम डिफाइनिंग माय एजम्पशन व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, तो जो लिसनर होता है उसे पता चलता है, उसके एटीट्यूड का भी पता चलता है कि जो स्पीकर है उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, किस तरीके की बात कर रहा है वो. ठीक है. The last part is saying a good listener can often restructure vague speaking into a clearer meaning. Means like, you know, you were saying this slide, but if I would have, you know, just shared that slide to Ritik and I would have said that to read this slide. So if he was even speaking something wrongly, vague, but what you could do, the good listener can make out some meaning out of it, that what he wanted to say. कई बार होता है हम किसी के सुनते हैं, वो जैसे होता है ना, जैसे आपके वहां पे मैं किसको बताऊं, जैसे मान लो काम करने वाले बाई आती है, उसको नहीं प्रॉपर आ रहा है, उसने लेकिन जो भी बोल रहा है वो आपको समझ तो आ जाता है. तो क्या कहना चाहता है, क्यों समझ आ जाता है, क्योंकि आप सुन रहे होते हो उस समय ध्यान से कि बोल क्या रहा है, क्योंकि आपको पता है जो बोलेगा मुझे फिर समझ नहीं आएगा. यू आर लिसनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन यू make out the meaning. Even you give some meaning to the vague spoken matter, right? I hope this slide is clear. Why we should listen carefully. This is the why, importance of good listening. Now moving further, research has revealed the following facts about listening. Research means many people have done some researches. So according to that research, it has been found that listening skills can be improved by training and instructions. What I am doing, I am giving you instructions, and what I did, you know, when I was asking you to say the, you know, different names, that was the training. What I did at that particular moment, it was a small training, very small training of 5 minutes maximum. So listening can be improved. जैसे कि अब मैं जो कुछ कहूंगी तो दोबारा आप उसको सुनोगे, क्योंकि अब समझ में आ गया कि मैम कभी भी कुछ पूछ रही हैं, तो चलो ध्यान से सुनते हैं. So that is how we can improve our listening. When improvement in listening is achieved, it may not be permanent. Might be possible आपने उस particular moment पे ध्यान से सुन लिया, अभी फिर से दिमाग इधर उधर जा रहा है ना, कहीं और दिमाग घूम रहा है. It may be possible that is listening is not a kind of permanent attitude. It is any time, any moment. मैं अभी बहुत ध्यान से आप मुझे सुन रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका माइंड कहीं और चला जाता है. ठीक है. तो it is not like a permanent thing. There is a distinct difference between speaking rate and listening rate. We, you know, speaking at, you know, the researchers has, you know, shown that, I am telling you here the figure, that speaking rate is slow and the listening rate is high. So what happens? Somewhere it is difference of 75%. That you can grasp more and the speaking rate is coming less. So what is happening? That the person who is listening there, उसको टाइम मिल जाता है उसका दिमाग इधर उधर होने का. ठीक है. क्योंकि बोलने का एक स्पीड होता है, आप उससे ज्यादा स्पीड से नहीं बोल सकते हो. अगर ज्यादा बोलेंगे तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल के आएगा, है ना. ज्यादा स्पीड पर आएंगे तो कुछ मीनिंग ही नहीं पता चलेगा. पर जो लिसनिंग का है वो अगर मान लो कि 100 वर्ड्स पर सेकेंड वो प्रोसेस कर सकता है,
तो बोलने का 25% है. I can speak 25 words. I'm just giving you example there. तो इस तरीके से वो चल रहा है. तो लिसनिंग में क्या हो रहा है कि आप सुन रहे हो और आपको एक गैप मिल जा रहा है प्रोसेसिंग होने के बाद, समझने के बाद. अब क्या करूं? जब तक अब क्या करूं आता है, माइंड कहीं और से कहीं और चला जाता है. ये आपकी गलती नहीं है, ये रेट की गलती है, जो स्पीकिंग रेट एंड लिसनिंग रेट है. ठीक है, बट इट्स ओके. वी हैव टू फोकस, वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट. Generally, there is a high correlation between listening and intelligence. Means what? The people who are listening, they are more intelligent, right? So that is high correlation. Means if listening is high, then intelligence will be higher. So we have to ensure that we are listening carefully. Then it is said, 1/4 of our waking time is spent on listening. 1/4 of our waking time is spent on listening. We are listening something and the other. So that research has said. Now coming to the point, nature of listening. Nature of listening, it requires paying attention. It is always said in the class or somewhere in the meeting or somewhere in the conference kind of thing that please pay your attention. Means the person who is doing anything at that moment, that person will look at the speaker, what he is saying, right? So paying attention. Interpreting. अब जब आप अटेंशन दोगे तो क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे, जो कहेगा वो सुनोगे, सुन के क्या करोगे? याद रखोगे कि हाँ जी कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे, राइट? नाउ व्हाई वी आर लिसनिंग? व्हाट इज द नीड ऑफ लिसनिंग? पर्पस ऑफ लिसनिंग? टू गेन न्यू इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. दैट इज व्हाई वी आर लिसनिंग. टू बी इंस्पायर्ड. टू बी इंस्पायर्ड मीन्स when we listen some motivational speaker kind of thing. Just a moment, I'm in the class, come after half an hour. To be inspired, we are getting inspiration from the person who is giving some lecture of motivation or something like that. So that is why we listen, right? The next point is saying to question, test evidence and assumptions. Once we are listening, what we are doing? We are trying to create some kind of assumption that yes, this life after reading or taking the class of today's, some assumptions you will make. You will create some assumptions like, okay, listening is important. Okay, speaking rate is lower than the listening rate. तो ये सब आपके अपने assumptions भी बन जाएंगे, ठीक है ना? Then test evidence. Why we are listening? Because somebody is saying this is happening when you do this. So you are, next time what you will do, the same thing will come. Then you are going to test that. Yes, whether it is happening or not. And to question. Might be possible that that topic is interested. I have some interest in that topic and I wanted to learn more about it. So I can question it. तो when I can question, जब आप लोग से पूछा जाता है ना कि कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, और जितने लोग नहीं बोलते हैं वो सारे लोग नहीं सुन रहे होते हैं. समझ रहे हो? यहाँ से समझ में आता है जब आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ना, इसका मतलब है कि आपने नहीं समझा. आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी क्लासेस में काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं. आई एम रियली हैप्पी फॉर इट. बट दिस इज द जब कभी भी कोई गेस्ट लेक्चर होता है, कभी भी कुछ कहीं पे वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, जो पर्सन क्वेश्चन नहीं पूछता है, तुम चाहे किसी और क्लास में जो लैब की क्लास है, जो कंप्यूटर्स की क्लास है, और भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी तुम पढ़ रहे हो, वहां पे तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम सुन नहीं रहे हो, या तुम सुन भी रहे हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है. समझ आएगा तो आई एम श्योर 100% समझ आ ही नहीं सकता किसी को. तो कुछ ना कुछ नहीं पूछेगा तो वो उसके अंदर से कुछ डाउट आ रहा होगा ना, जिससे उसको पता है कि यही है, लेकिन फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि अच्छा ये ऐसे ही होता है ना. मतलब he will say the same thing, he or she will say the same thing just to ensure कि मैम यस बोल दे तो मेरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी मेरे को आता है. या तो आप अपने को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछते हो, या आपको कुछ नहीं समझ आया तो पूछते हो. पर ऐसा हो ही नहीं सकता. कोई क्वेश्चन नहीं आने का मतलब है कि आपने कुछ नहीं समझा है, या 70-80% समझा है, बाकी आपको समझ नहीं आया. मतलब कहीं तो है जो आपने समझा नहीं. अगर पूरा ही समझ गए हो, 100% समझ गए हो, तो आप उसको कंफर्म करोगे. कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि ऐसा कहा था मैम ने, ऐसा होता है क्या, 100% यही कहा था क्या? तो देयर विल बी सम डाउट. ओके फाइन, लेट अस मूव टू improve overall communication. Once you are listening, so you are going to improve your overall communication. Means
You will acquire some knowledge from there. You will learn how to pronunciate. Sometimes it happens that we don't know how to pronunciate particular word. I'm not saying all the words. Nowadays we have so many, tools for it. You can check in the dictionary also how to pronunciate that particular word, or you can just in online Google, you just type how to say this, and even sound volume you will get that, yes, some sound will get that how to say that word. So once you are listening, you will understand it in a better way. And when you will listen, you will have some content. If somebody will ask you to speak on some matter, on that kind related matter, then you can add some value from there, from that particular talk. So this is going to improve your overall communication. Fine. And overall communication, when we say, that means writing, reading, speaking, and particularly listening. I have already discussed about listening and hearing, listening and thinking. Listening and thinking go together. Once we are listening, we are analyzing what speaker has said. So we are thinking together, right? What do we communicate by listening, by the way? Answer me this question, what I have not answered. Let me know somebody, what do we communicate? Yes, please. No, Anand, even as of now, I was going very fast, but still I said that listening skill is 100 words per minute, then speaking is 25 only. So I can maximum I can speak 30, 31, 35, but not the 100 words, right? So it is not like that. And okay. No, my question now to you people is open to all. Just write your name who is going to answer. The first one. What do we communicate by listening? If you are listening my class, what are you communicating to me? अगर मुझे सामने से सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, and I am going to give attendance of today, to 62 students only. अगर उससे ज्यादा जो भी होगा उसका मैं एब्सेंट मार्क लगाऊंगी. मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लिया है सबका कि कौन कौन यहाँ पे हैं. अभी एक और कोई चला गया. Anyway, what are you listening there? Okay. Anurag is saying that we are understanding what you have taught. Okay. What are you listening? What are you communicating? What do we communicate by listening? अगर आप सुनते हो किसी को तो क्या समझ में आता है? क्या communicate करते हो आप? Yes, Dev. Ma'am, ideas, emotion, feelings, and information. Can you elaborate it? I could not understand. Ma'am, ideas, emotion, feelings, and information. You are communicating that. यहाँ पे ये मतलब है इस क्वेश्चन का, तो मेरे को आप कुछ बोले नहीं पर मेरे को बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तो मुझे क्या समझ में आता है? You are giving respect to the listener, to the speaker, ठीक है? That you are communicating. You are communicating that yes, I am listening because I am learning something. Without saying anything, you are communicating to me that yes, ma'am, I am listening to you, and yes, that we have understood. Then yes, if you are listening, you are communicating that whatever you are saying, I am respecting you. Sometimes it happens that yes, ma'am, we give our feedback. Yes, feedback, वही feedback, क्या बिना बोले क्या feedback दे रहे हो, क्या communicate कर रहे हो, ठीक है? You are giving feedback, तो बोल के कर रहे हो तो कहानी खत्म हो गई ना. बिना कुछ बोले अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो तो क्या कम्युनिकेट कर रहे हो कि मैम मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हो गलत सही मैं सुन रहा हूँ. जरूरी नहीं कि हर बार स्पीकर, मेरे पास तो कंटेंट है आपको पढ़ाने के लिए. इट्स नॉट necessary that the speaker is saying whatever he or she is saying that is true. It's not like that. But still, if you are listening to that person, that means you are giving some respect. You are open to listen. You are eager to learn something. You are communicating that. I hope it is clear.
Let us go to the मैम next. हाँ जी. मैम asking question about the certain topic. हाँ, वो आएगा. उसका मतलब यही है कि तुम सुन रहे हो पर बिना कुछ बोले तुम क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, वो मतलब था मेरा वहां पे क्वेश्चन का. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसको खत्म करना बेटा. और ये लास्ट क्लास है या इसके बाद भी क्लास है? क्लास है शायद. टाइप्स ऑफ लिसनिंग. मैम लास्ट क्लास है ये. एक बार चेक कर लेना प्लीज. अगर लास्ट है तो वी कैन स्ट्रेच 5 to 10 मिनट्स. प्लीज चेक करके मुझे कोई बताना. लास्ट है मैम. वैसे मैं तुमसे लास्ट है मैम. लेट मी चेक इट हियर ओनली बिकॉज़ आई हैव आल्सो ओपनड इट. लास्ट है ना? बस ठीक है. 5-7 मिनट हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे. ठीक है. अब जिसको लगे कि बहुत ज्यादा हो गया वो जा सकता है, कल की क्लास में पूछ लेना. बट अब ज्यादा नहीं है तो आई वुड से कि 4-5 स्लाइड ही है. तो आई होप कि मेरा अपना ही 8-9 मिनट है अभी तो विल डू दैट. अच्छा, टाइप्स ऑफ लिसनिंग. Which are the different types of listening? These are the major 4. That is attentive listening. Attentive listening is what? It is, involving your attention. That you are listening there and understanding, and you are giving your head and heart to the speaker. That yes, I am there, I am listening you. Right? समझ आया? जब आप सुन रहे होते हो, attentive listening is like whole soul you are there and you are listening and you are understanding. These are the two things are happening once you are having the attentive listening. ठीक है. आप उनकी बातों को, एक एक बातों को समझ रहे हो. Then pretending listening. Pretending listening is what? You are just pretending. कई बार आपने, मैं अभी तो नहीं पता चलेगा क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास में है, आपको स्कूल की याद दिला दूं कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे और आप सोच रहे हो कि अच्छा क्लास खत्म होगा तो मैं जो है अपने फ्रेंड्स के साथ पहले तो कैंटीन जाऊंगा, कुछ खाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा, अच्छा मैं घर जाके ये करूंगा, है ना, या करूंगी व्हाटएवर. तो उस समय क्या है, आप दिखा तो रहे हो. कई बार हम देख भी रहते हैं, वी आर लुकिंग एट दिस फेस ऑफ स्पीकर बट वी आर एक्चुअली नॉट लिसनिंग. और वो पता चल जाता है क्लास में. फिर टीचर कहते हैं हाँ जी कहाँ हो, यही हो. हुआ होगा आप लोगों के साथ, किसी के साथ हुआ हो तो शेयर भी कर सकते हैं. So that is called as pretending listening. We are just showing our face, like facial expression is like that, that you are listening, but actually you are not listening. That is hearing. मतलब anything which is going to your eardrum and coming back from there, not hitting your mind. So that is the pretending listening. Now the selective listening. Selective listening is what? Like this is your class actually, this is communication. So you have to listen entire content, entire talk. But when sometimes it happens like in conference only, you had so many sessions, you had the program scheduled. So might be possible some topics were interested to you. So you might have thought that yes, this speaker will, when that person will speak, I will listen to that person. So that is what? That is the selective listening. And the same person, if he or she is saying something, so what happens? What we decide in ourselves, in our mind, that yes, once he will speak about this particular point, I am going to listen it. So that is the selective listening. Or meeting is going on. This is the thing I am sharing it with you people. That meeting is, let's suppose some official meeting is going on, right? And in that meeting, I know that this is not my job, so what is the need of listening to it? Then these are the things, some other exams, and they are talking about examination, what I have to do with examination. जैसे कि अभी बच्चे मेरे ना, तुम लोग के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स शुरू हो गए हैं आज से. तो बच्चे पूछ रहे थे मेरे से आकर के, या मैसेज आ रहा था, मैम हमारा एग्जाम कब शुरू हो रहा है, एग्जाम कब शुरू हो रहा है. मैंने किसी को नहीं आंसर दिया, सीधा बोला कि जाके एग्जाम में बात करो, एग्जाम वाले सर से बात करो. क्यों? मेरा था कि जब वो मीटिंग में डिस्कस हुआ है, ये जैसे स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर मैंने नहीं सुना. मुझे लगा कि वो एग्जाम का काम है, एग्जाम वाले कह रहे हैं, और मैं तो ऐसा ओवर ऑक्यूपाइड थी. मैंने कहा नहीं, मुझे सुनना कुछ भी ध्यान से. मेरे को, मैं उसमें ऑलरेडी कुछ काम कर रही थी और ऑनलाइन मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि जब मेरा नाम आएगा तो मैं सुन लूंगी. तो दैट इज व्हाट, दैट इज द सिलेक्टिव लिसनिंग. जैसे कि कोई मीटिंग में, चाहे आजकल तो साल भर से, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया अब तो, कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑनलाइन मीटिंग ओनली. और ऑनलाइन मीटिंग में जहां नाम आएगा कि सीमा, तो सीमा सुनेंगी. जब नाम आएगा कि प्लेसमेंट, तो मेरे दोनों कान खड़े हो जाएंगे, हाँ जी सर प्लेसमेंट वर्ड कुछ बोला है, मेरे से पूछा जाएगा. जैसे ही आएगा कोई इंडस्ट्रियल टॉक, तुरंत मेरे कान खड़े हो जाएंगे. मीन्स व्हाट, I am there once what I wanted to listen,
But if other things are going on, I am not there. My physical presence is there, but I am not listening to it. So that is known as selective listening, right? Now, empathetic listening. Empathetic listening is what? It is, you are, when your heart and soul is there, that is attentive, but you just put yourself there. I mean, you put yourself in at the place of the speaker. Then it is known as empathetic listening. Means you are fully emotionally everything, you are there to listen that speaker. So that is the empathetic listening, and we must have it. So what happens generally that once there is some talk, something is there, we don't keep ourselves at the place of speaker. So you are not understanding the problem of the speakers, right? So once you are understanding the problem, the challenges what the speaker is facing, and you add something from your side, you are listening to that, and even that person understands. The speaker understands that this person is having the empathetic listening. He is keeping himself or herself at my place when I am speaking. So this is what about types of listening. Now, how listening is taking place, what is the process? So there are 4 steps. One is hearing. Hearing means, see, hearing and listening में difference कहाँ पे आ जाता है कि where you start interpreting, that becomes the part of listening. But definitely listening will start from where? From hearing itself, right? So the first step is that I am saying something, then some noise is coming to your eardrum. So that is the hearing, right? And then you interpret. You are trying to make out some meaning out of it. So that is the interpretation. Fine. When you are evaluating means, like let's suppose I just said, I am taking class of business communication. Fine. So you heard that line. So that is the hearing, first stage. Interpretation, what you take out the meaning from there? Sima ma'am is taking class. So you interpreted that Sima ma'am is taking class, right? Evaluation. Evaluation is about then you start judging. I am taking class of business communication. अच्छा मैम सच में business communication पढ़ा रही हैं या कुछ और पढ़ा रही हैं? So that is the evaluation. ठीक है? And then respond. Respond is last stage, that is saying about if I ask something, you are going to respond related to that matter. Right? जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप लोग आंसर दे रहे हो, तो दैट इज द रिस्पॉन्स. अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, इवेलुएट कर लिया, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर आएगा. कई बार आप पूछते हो ना, अच्छा मैम क्या पूछे थे, किसी भी, नॉट इन माई क्लास ओनली, with any other teacher, when you ask, ma'am please repeat the question, that means what? You did not hear that question, you did not interpreted that. जब सुना ही नहीं तो इंटरप्रेट क्या करोगे और इवेलुएट क्या करोगे? जैसे ही आप कहते हो ना, जैसे कि आप इंटरव्यू देते हो और आप कहते हो कि beg my pardon, please repeat it or something like that, not listening. समझो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, आपके सामने जो बैठा है उसको पता चल जाता है. और नहीं पूछोगे तो आप जवाब नहीं दे सकते, पूछना भी पड़ेगा. तो हमारी लिसनिंग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए. Barriers to effective listening. These are the barriers. Physical barrier like noise. Some noise is there. जैसे कि अभी 2-3 लोग ऑन हो जाते हैं तो नॉइज आनी शुरू हो जाती है. Malfunctioning of the mechanical devices being used. Some problem is there with the device. Sometimes it happens. Some network, in this mode we can say network availability of the network, that depends. Some frequent interruptions. Some problems are there. Let's suppose I was getting a call of some teacher and I have taken that call. So there is interruption. So that is going to create a barrier for you. Then uncomfortable sitting arrangements. If you are sitting somewhere at even home and you are not feeling comfortable, then you are not going to focus on the content part. You will be worried about this sitting arrangement. Physical barrier.
मैसेज ओवरलोड का मतलब है कि जैसे कि 12:15 हो चुका है, क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो इसके बाद अगर मैं आधे घंटे और पढ़ा दूं तो वो आप नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे, है ना। तो if it is overloaded message, then also we are unable to listen, and that is going to hamper the effective listening. Now, people related barrier. State of health. If some of you are not feeling good, maybe you have some physical problem or you have some cold and fever, तो पता चला कि आपका ध्यान सारा उधर है और आप सुनने पे नहीं ध्यान लगा सकते क्योंकि आप परेशान हो अंदर से, है ना। डिसेबिलिटी इज देयर, हियरिंग इज द फर्स्ट स्टेप, और किसी को डेफ हो, किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो कैसे सुन सकता है ना। तो दैट इज द डिसेबिलिटी। वॉन्डरिंग अटेंशन मीन्स यू आर, हाँ यहाँ पे देखो रेट आ गया है, कोई मुझसे रेट पूछ रहा था, ये देखो यहाँ रेट आ गया। रिसर्च में मैंने वहां लिखा नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ पे करना था, मैंने कम ही बताया, ये ज्यादा है यहाँ पे रहता। रिसर्च ऑलमोस्ट इक्वल है। रिसर्च शोज दैट द ह्यूमन माइंड कैन प्रोसेस वर्ड्स एट द रेट ऑफ 500 पर मिनट, मतलब आप 1 मिनट में 500 वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हो, whereas the speaker speaks at the rate of 150 words per minute, right? So there is a difference of 350 words per minute. So this leaves the listener with sufficient time to let his mind wander, right? So what happens? We are not focusing upon it. So what is the reason? मैं आप आनंद कह रहे थे आप कि इसका मतलब कि स्पीकर जो है ज्यादा तेज से बोलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम ज्यादा तेज बोलते हैं तो भी नहीं समझ में आता है, कितना भी राजधानी की स्पीड में चले तो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ध्यान से सुन रहे होते हो तो स्टिल यू आर गेटिंग सम गैप, एंड दैट इज आप मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अभी भी रिपीट कर रही हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड की प्रॉब्लम है। वो भी ज्यादा काम करता है तेजी से, और यहाँ पे आपका जो स्पीकर है वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो दैट इज द रीजन बिहाइंड our wandering attention, right? We are unable to pay attention. That is the reason. Then comes psychological barrier. Psychological barrier is what? Psychological is again related to your own personality or your own individual's psychology. That is being unsure of the speaker's ability. If you are listening to someone first time, you don't know how good or how bad that person will speak. But what happens? We judge the people, before doing anything, preconceive the things. So that is going to hamper your listening skill. You don't have to prejudice. You don't have to be, have anything in your mind. You just listen to that person. That is, I am going to learn something from there. So it's better to pay attention properly, right? Then personal anxiety. Sometimes it happens like, I'm already overloaded with my work, with my job, and if somebody is saying something at that moment, I'm not going to listen, right? Like maybe possible that I'm just because of the, but due to my personal engagements and other things, or even my own job what I'm doing in the college, it has not been completed, and I'm worried about it. So I'm not going to give my 100% there, though my physical presence is there, right? Then attitude. Some people are having such attitude actually कि तुम किसी को भी बुला लो, मैं तो नहीं सुनने वाला। देखो एक बात बताती हूँ, ध्यान रखना कि मेरे को इतना टाइम हो गया, एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ में 20 इयर्स होने वाले हैं मेरे पास कोई कितना भी, और आज के डेट में स्पीकर्स आते हैं तो उनकी कई बार होता है कि जो वो काफी यंग एंड वो डायनामिक जो भी कह लो होते हैं, जूनियर्स होते हैं मेरे से ज्यादातर आजकल जो आते हैं, तो मेरे को तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि यार ये तो कुछ भी बोलेगा, मैं तो सब जानती हूँ। जहां ये एटीट्यूड आया ना कि मैं तो सब जानती हूँ, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आपको लगे तो थ्योरी सब्जेक्ट है, मुझे तो ऐसे ही कर लेना है। जहां ये एटीट्यूड क्लास में नहीं है, वो क्यों नहीं है? दिस इज द मेजर रीजन that they know I know everything. So once you have such kind of attitude, you are not going to listen anybody. So my submission will be that if anybody who is speaking in front of you or giving you some lecture especially, then you please listen it carefully. कुछ तो बता के जाएगा एक चीज जो आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं जाना होगा, ठीक है? So that is my submission. Now the last one is impatience. The listener may not have the patience to wait for the other person to finish. कई बार होता है ना, कुछ सुनने से पहले ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं या कुछ चल रहा है बीच में इंटरप्ट करते हैं।
So what it is showing that impatience, you are not having patience. Okay? So at that moment, and what is happening? You are interrupting the speaker, and the speaker is not going to listen to you. So whatever the matter that person, the speaker is delivering at that moment, you are not going to listen that. क्योंकि आपका दिमाग तो इसमें है कि मैंने को पूछना था, इसने बताया भी नहीं, ये कह रहा मैं पहले खुद ही का कंप्लीट करूंगा, राइट? So these are the psychological barrier. Now, how to inculcate effective listening? Guidelines for effective listening. So we have to pay our concentration. Active listeners concentrate at a high degree, whatever it has been said. Mental alertness, you have to be mentally alert that what has been said, you should try to remember the facts, then you are going to listen. Empathy is again has come here. So empathy is the ability of one to perceive another person's worldview. You are understanding in what situation a speaker is saying something. So that is the empathy. Okay? Yes, speaker के केस में general meaning of empathy is you keep yourself in another's shoes. You must have heard that proverb, right? Comprehension here we mean by that we should listen, and try to write some point, take some inputs from there. You're going to take some input from there, then you will develop some appreciation that yes, this person has said something good. जैसे कि जो मैं बातें कह रही हूँ वो कोई नई बातें नहीं होंगी, आपने पहले से सुन रखी होगी, लेकिन जब आप इस चीज को इनपुट के तरीके से लोगे तो यू विल say that yes, what ma'am is saying is good, right? Then it is note taking. Why it is always और अभी चेयरमैन सर को एक बार सुना है, सामने से देखोगे तो वो आपको कई सारी चीजों पे कमेंट करेंगे. अगर आपके हाथ में पेन और पेपर नहीं है तो he will say कि then why you are here? If you are not writing anything what I am going to say and your mind will not remember for the long period of time, then what is the need of being here? It's better not to be here, right? So you must have pen paper so that you can take some notes. If you are listening to somebody, you must have some, you understand it and then write something. Then what happens that you can remember it for the long period of time. Then evaluation here we mean by that once you are listening to someone, you can make the judgment that whether the things have been said, it is true or not. So it is very much important to evaluate, and here we have finished the unit 1. And how many are there now? Students is only 50. So 10 have gone, I believe. You can imagine what happened to my voice, Shivani. Are you listening? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. So I Yes, hope ma'am. everyone has Yes, marked ma'am. it. Yes, ma'am. Okay, great to hear from each one of you mostly. That is my pressure that you people are not Thanks, speaking. ma'am. Sometimes I believe that. So any point which is not clear in today's topic? No, ma'am. No, ma'am. Everything is clear? No, ma'am. No Yes, ma'am means ma'am. what? Mama, I have a doubt. Yes Clear, or no ma'am. का क्या meaning है? No ma'am Ma'am. मतलब और clear? Clear, ma'am. Clear. Doubt. Ma'am, hearing. Can you Hearing. can you explain, ma'am, again? Hearing is that, like I am telling something right now, and you are understanding. Then it becomes listening. But it is just going to your eardrum. You are getting some voice, but you are not interpreting, not doing anything. It is hearing only. ठीक है? जैसे कई बार चीजें होती है ना, जैसे कि आप रोड पे जा रहे होते हो, इतने सारे हॉर्न बज रहे होते हैं, तो हॉर्न बज रहे होते तो कई बार होता है ना कि सामने से हो रहा है पर आप उसको फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो ध्यान ही नहीं दे रहे. तो दैट इज हियरिंग. कान पे आवाज जा रही है, कहते हैं ना, इसके हिंदी में बड़ा अच्छा एक प्रभाव है कि इनके कान पे जू नहीं रहता. मीन्स व्हाट? कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कुछ हो रहा है वहां पे. यू आर अंडरस्टैंडिंग. एहसास में देयर इज नो फीलिंग ऑफ इट. So that is what hearing. Only some physical noise you are getting on your eardrum. That's it. It is not entering into your mind. ठीक है? समझ आया? Yes, ma'am. Ma'am, when you speaking is जैसे to कि speak आपने clearly. हाँ, what When you please? speaking is speak to clearly. Means I'm not getting you what you wanted to say.
You Ma'am, are my talking about point is when you myself. speaking. For myself, you are saying when you are speaking clearly. Means what? Yes, ma'am. You are saying about me for myself. See, though our researches have shown that what it has shown that people are understanding at 500 words per minute, and a speaker can speak at 150 words, right? But here, if you wanted to become a very good speaker, your you have to ensure that you are not speaking at very fast speed. Like right now, what I am speaking, it must be reaching to your mind, right? But when Yes, I ma'am. speak क्यों? क्योंकि पर इंसान और भी बोर होने लगता है 500 पे ही तो 150 पे ही तो परेशान हो जा रहा है नहीं सुन रहा है तो आप ज्यादा स्लो बोलोगे तो और भी नहीं सुनेगा so we have to Yes, maintain ma'am. and then the matter comes how much how many words so 150 is the right limit we should speak maximum 150 words in a minute then if you are speaking like that then it is said that it is a very good speaker उसके बाद आता है कि आपने कंटेंट क्या बोला मान लो कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और बहुत जल्दी 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 बोले जा रही हूँ तो आप सुनोगे नहीं ना समझ ही नहीं आएगा क्योंकि मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे मेरे सेंटेंसेस क्लियर नहीं होंगे प्रॉपर नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा तो टू बिकम अ गुड देखो यहाँ पे हम लोग लिसनिंग की बात कर रहे थे स्पीकिंग की तो जब बात की थी ना अभी हाउ टू कमांड ओवर लैंग्वेज तो स्पीकिंग में भी वहां पे स्पीकिंग स्किल की बात नहीं हुई थी स्पीकिंग लैंग्वेज की बात हुई थी है ना तो ये हम लोग कर लेंगे एक किसी में कवर कर लेंगे कि हाउ टू स्पीक स्पीक मीन्स स्पीकिंग स्किल जहाँ पे आपको कैसे बोलना चाहिए जैसे कि आप नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनो बेस्ट भाषण है आज तक के टाइम का और कितने अच्छे से करीने से बोलते हैं एक एक वर्ड क्लियर होता है सिमिलरली उस दिन अगर वोट ऑफ थैंक्स देखना हो तो चेयरमैन सर का वोट ऑफ थैंक्स देखो जो लास्ट डे वैलिडिटी सेशन में सर ने बोला था तो ये इस तरीके से बोला जाता है आई एम गोइंग टू अरेंज वन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जो लोग यहाँ पे हैं अगर 39 बच्चे भी कहते हैं 39 में तो एक मेरी ही लॉगिन होगी एक या दो मेरी ही लॉगिन होगी तो 37 में भी so 37 out of 37 if how many of you would like to attend the class of chairman sir Yes, ma'am. I Chairman Yes, would. ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. please please write here so that I can Yes, see ma'am. more Yes, yes ma'am. okay so those who have not spoken you can write it here in the chat box Yes, ma'am. yes so if you are really ready to take his class then I would talk to him today evening that I had a talk with my students and I will request him to speak on speaking skill only ठीक है बेटे लेकिन उनकी क्लास तुम सोचोगे कि दिन के 12 बजे हो जाए तो मुश्किल है मैं कोशिश करूंगी आफ्टरनून में और स्पेशल लेक्चर कभी भी आपका जो है इसमें नहीं होता क्लास के बीच में नहीं हम करते क्योंकि आपकी क्लासेस हैम्पर नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन में वी हैव दिस चॉइस to conduct the class you can attend the class from anywhere तो आप सबसे बस इतना ही रिक्वेस्ट होगा मेरा कि मैं सर की क्लास तो करा लूंगी मुझे पता है वो मना नहीं करेंगे एनी टाइम ही विल बी रेडी लेकिन आप लोगों से बस ये होगा कि उसके ऊपर जो सर लेक्चर देंगे उसके ऊपर आप लोग को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी ठीक है Okay, ma'am. श्योर मैम गुड Sure, ma'am. तो उससे क्या होगा कि मैं सबको दिखाऊंगी एंड आई एम टेलिंग यू अगर आपको रिटर्न रिपोर्ट भेजोगे ना मैं एक एक बच्चे का सर से सर को बहुत अच्छा लगता है कि वो करेक्शन करते हैं और उसको कोई अडेप्ट करे ही लाइक्स इट वेरी मच तो मैं आपको करेक्शंस दिखा दूंगी कि सर देखो इन बच्चों ने इतना काम किया है और इन्होंने रिपोर्ट बना के दिया है आपके लेक्चर के ऊपर जो है और उन्होंने ये सीखा है और जो भी लर्निंग होगी वहां पे ना प्लीज उसको प्रैक्टिस करो फ्रैंकली स्पीकिंग बेटा ये 100 में 100 नंबर लाने से लाइफ नहीं चलने वाला उससे बाहर आ जाओ 10 प्लस तक का जो था आपका ना सफर वो एक अलग सफर था आज मतलब ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स जो सफर है जो जो आपकी जर्नी है वो डिफरेंट है ठीक है ना जो समझा जो किया बहुत अच्छा किया आपने वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द पास्ट सो आई नेवर टॉक अबाउट द पास्ट ठीक है वो पास्ट से मैं लर्निंग ले लेना चाहिए बट आई जनरली डोंट टॉक अबाउट द पास्ट खैर आप लोग इस पे जाओगे ना तो आधे घंटे और बैठना पड़ जाएगा तो इट्स बेटर टू लीव द क्लास नाउ क्योंकि जिन्होंने मुझे सुना है वो देखें कि अभी निकल रहे मैम अभी जा रहे मैम और जाते जाते उनको 1 घंटे लग गया था जाने में तो इट्स बेटर नॉट टू
से मोर हियर। जिनको मेरी सुननी हो मुझे बता देना कभी, आजकल थोड़ी बिजी चल रही हूँ, थोड़ी सी फ्री हो जाने दो, देन आई विल टेक सम क्लासेस ऑफ